सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज, सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज, बात आ गई। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर। No double standards, no compromise. Why do I thank Modi? Why? The reason is दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब आप किसी के दुख तिरक पर हाथ रखते हो ना, तो फिर वो उसकी चीखें निकलती हैं। और राहुल गांधी ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया है कि कैसे बाहर के लोग आकर हमारे मसाइल डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं कि आपने किससे तेल लेना है, किससे नहीं लेना। ये बाहर के लोग डिस्कस करेंगे और बाहर के लोग ही डिसाइड करेंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई अमल दमल नहीं होगा। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि ये इस पार्लियामान के लिए बहुत ही शर्म का मकाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो चलकर वीडियो देखते हैं, वापस आकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। And it is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture, on which there is a case in the United States. He has surrendered. I'm not saying anything. बार-बार एक चीज का मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली एक आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन। I would I have got it. You have because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. Sir, kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. The proper document, proper record. Otherwise, और sign करके देना है. Otherwise, authenticate. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I will. Here you are only. The evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा। राहुल जी, Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning them. How you can? You have made it promise. No. You have made it promise. Mr. KC Venugopal बैठिए. I am not allowing you. KC Venugopal जी बैठिए. I am only talking to Rahul. I am not allowing to you. If you have made it promise to the chair, I am not going to mention the name of any minister, not the member, and repeatedly, it means you are defying the even ruling of the chair also. Okay. कोई कार्रवाई Speaker, sir. नहीं ये Let me speak, sir. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लिया, उसके sir. बाद नहीं फिर ले रहे हैं। नहीं लिया, sir. नहीं ये नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपने शुरू में कहा कि Speaker, sir, बोलने तो नहीं है, व्यवस्था खत्म दी, करता मैंने पीठ से व्यवस्था दी, और आप इसके बाद कह रहे हैं। आप ये बताइए कि ये हाउस आज बजट स्पीच है जनरल, इसके पहले महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण था। अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्या भाषण होता है, बजट पे आपकी क्या स्पीच होनी चाहिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स में क्या स्पीच होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पे जो बोल सकते हैं वो वहाँ बोलना चाहिए, तो वहाँ नहीं बोले। अब आप बजट पे बोल रहे, कल डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा किसी बिल पे, तो ये सदन अलग अलग जब विषयों पे होता है। नहीं, आज आप बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे। या जब आपको एक बार चेयर से कोई रूलिंग होती है, आप देखिए इसी चेयर से रूलिंग हुई, सारे में आप देखिए कैसे वेणुगोपाल जी जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी स्पीकर साहब लगातार अलाउ कर रहे थे, आप बाहर जाके कहते थे स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे हैं। आज आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं। चलिए खत्म। Speaker sir, I'm concluding now. I only started to say that because the minister said
that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. 1 second, please. I have the paper. Now I said to you, 1 second, I have the documents here. I said to you that I will authenticate, and I will also I will authenticate right now, and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. I understand it. I understand you don't want me to authenticate here. You want me to authenticate there. That's not a problem. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times, and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. You have said. I think so. Can I conclude? Conclude. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, followers are millions, even enemies are large, mashallah. So much so that today, most of the countries are after me, majority. You know, in India, about 2 years and 4 months back, in November 2016, they banned the organization. I'll come to my organization afterwards. And the present Prime Minister, the Narendra Modi, I would like to thank him. He's the Prime Minister now, elections are going on. After 1.5 months, whether he remains or not, Allah Alam. Allah Alam. Maybe, may not be, I don't know. But presently, he's the Prime Minister. The government is so much against me, they spend tens of millions of dollars to propagate against me on the television channels, in the newspaper. And so many years, I'm giving everything clearly to the income tax. This is what I earn. I'm NRI, non-resident Indian from Dubai. No questions asked. Now when the government is against me, now they're saying money laundering. They're laying allegations. They're laying allegations, public fund, misuse. Get me one person, not to one person, with the receipt who has given any money to the organization, and that wasn't used for the activity. But why do I thank Modi? Why? The reason is that previously, maybe 2/3, 65% of the Muslim knew me, and maybe about 10% of non-Muslim did not. 10% non-Muslim knew me. Now, after spending millions of dollars in propaganda against me through television channels for his vote bank, today, mashallah, more than 90% of the Muslims in India know me, and more than 2/3 of the non-Muslims know me. Previously, maybe 15% of Indians knew me. Now, more than 2/3 know me, alhamdulillah. Those who had seen my lectures before, what are they doing? They are doing du'as for me. May Allah save this Da'i of Islam. May Allah give them Jazaak khair. Those who don't know me, have not seen my lecture, they get influenced by the media and they're cursing me. Now when someone curses you wrongly, our beloved Prophet said, it benefits you. If someone curses you wrongly, on the day of judgment, what will happen? I will get his good deeds. If his good deeds are over, my bad deeds will go to him. Prophet. So I'm thanking Modi. Now there are millions of people doing dua for me. MashaAllah. Those who knew me. There are bigger number of people who are cursing me. Both. नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।